the online session of Transparency International Pakistan. I'm Faria Fatma and associated with TI Pakistan's Climate Governance Integrity Program. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान गुज़िश्ता कई दहाइयों से मुल्क में करप्शन के ख़ात्मे के लिए काम कर रहा है और पिछले एक साल से ये इदारा मुल्क में क्लाइमेट गवर्नेंस की बेहतरी पर काम कर रहा है। इसके तहत मुल्क की क्लाइमेट पॉलिसीज़ को बेहतर बनाने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ काम किया जा रहा है, जबकि कम्युनिटीज़ की सतह पर क्लाइमेट मिटिगेशन और एडॉप्टेशन के हवाले से अवेयरनेस रेजिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी काम किया जा रहा है। आज का हमारा जो ये ऑनलाइन सेशन है ये ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से है और इसका मकसद इस पहलू की निशानदही करना है, इसे हाईलाइट करना है कि क्लाइमेट चेंज से निमटने के लिए पाकिस्तान में जो भी इक़दामात किए जाएँ उनमें जेंडर लेंस को मद्देनज़र रखा जाए, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग हो या पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो। इसमें मकामी ख़वातीन के मसाइल और उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा जाए और इस हवाले से जो भी डिसीजन मेकिंग हो इसमें ख़वातीन को भी शामिल किया जाए। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ इस शोबे के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ़ करवाना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ़ अली साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के। आयशा खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा इज़ फाउंडर एंड हेड ऑफ़ द सिविल सोसाइटी कोएलिशन फॉर क्लाइमेट चेंज एंड माउंटेन एंड ग्लेशियर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। आयशा साहिबा गुज़िश्ता 20 साल से क्लाइमेट एक्शन के लिए पॉलिसी मेकिंग और कम्युनिटीज़ के लिए काम कर रही हैं। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौशीन वसी साहिबा। डॉक्टर नौशीन कराची यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और रिसर्चर और TI पाकिस्तान की मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी भी हैं। इसके अलावा हमारे साथ शबीना फराज साहिबा मौजूद हैं। शबीना फराज एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट हैं और गुज़िश्ता कई दहाइयों से क्लाइमेट चेंज, माहौलियात और ख़वातीन के मसाइल पर लिख रही हैं। काशिफ साहब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी और आपसे मेरा सवाल है। सॉरी, हम आयशा साहिबा, कैन यू हेयर मी? Yes, I can. मैं सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी और आपसे सवाल करना चाहूँगी। यू आर वन ऑफ द प्रोमिनेंट वॉइसेस ऑन क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जो इस वक्त क्लाइमेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं, ख़ास तौर पे नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, आप उन्हें जेंडर पर्सपेक्टिव से कैसे देखती हैं? और साथ ही अगर कुछ एंट्री पॉइंट्स आप तजवीज़ कर सकें जिससे ये पॉलिसीज़ मज़ीद फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पर मज़ीद जेंडर रिस्पॉन्सिव बन सकें। Thank you for having me on your show and part of this conversation. I think the question that you've raised is very fundamental, and it forms the basis on which the plan is predicated. To answer it, I'll have to contextualize it within the socio-cultural realities of our society and share some facts and figures with you briefly to frame my answer. I think the first thing that I want to highlight is that women constitute half of the population of Pakistan. But when you look at the gender parity index, Pakistan ranks very low. Then you look at the female literacy and the quality of the girl child education, and you find that it's both lower in quality and poorer in content than it is for boys. Only 22% of the women are part of the labor force in Pakistan, and that employment chain happens to be in the lower rungs of the ladder. So when you look at it through that lens, you realize that the women are very vulnerable in our society because our society is largely patriarchal, where the social spaces for the women are limited and they do not have equal access or opportunity to resources. So broadly speaking, when we talk about any policy frameworks or when we look at it through the lens of climate change, we have to acknowledge that women are not treated as equal partners in development or agents who have the right to exercise their free will. A large part of our population lives in the rural areas, and in these areas the disparities are more stark because here the women carry a disproportionately heavy burden of the daily chores that they perform, which is domestic chores, which include cooking, cleaning, fetching fire, water, often from long distances, which involves 2 or 3 kilometers or more of walking every day. They also have to help with farming activities, look after the children, and look after the sick and elderly in the family. So when we talk about policy frameworks,
The first one on climate change came out in 2012. The second updated version of that came up in 2021. In both of these, the sectors have been addressed, but gender per se is missing from the narrative. We don't see any specific focus on how women will be impacted by climate change, or what will be the measures and mechanisms that will be put in place to reduce their vulnerability or to strengthen their resilience. However, in the Climate Change Gender Action Plan, which was made in 2022, we see that the entire focus is on women, and the inclusivity of women, the need to provide space for them, to include them in all conversations, give them a specific role in making decisions, is all mentioned there on paper. But in reality, we don't see that happening in our society. And when you talk about, where do we go from here? I think the first is this acknowledgement that policy itself, having something down on paper, doesn't mean that that has actually taken place at the people's level. And the second thing is also to look at the emerging needs of the kind of society that we will be living in, and what will be the things that we will need to survive. So I think investment in life skills will become very important. And in girl child education, the first thing that we need to ensure is to make sure that they have equal access to health and education. Then we also have to take some proactive measures to ensure that women get the incentive to be part of enterprise and be part of the economy. Because if you talk about empowerment without money, it simply doesn't work. You have to have female representation, and somewhere make it mandatory that they are represented a certain percentage in all the institutions. So we are talking about a future in which climate change impacts are going to spiral out of control. And the coping skills of women will be very important. You cannot have half the population of the country vulnerable or as a liability, because when you say vulnerable, that means they cannot do to help you or society or their community, and you have to provide them with all the aid and facilities. And it need not be like that, because women are not vulnerable. They're simply made vulnerable by society. So at the school level, for example, I was reading somewhere that countries like Finland and Denmark, etc., they have introduced handling money and managing finance as part of their curriculum. So young children from the age of 5 or 6 know how to open bank accounts, how to handle money, how to manage their income and expenditure sheets. And these are simple things that we have to start looking at in the future, to make them part of our education system as well. Coping with crisis become increasingly important. We have to make sure on ground what are the training and capacity building measures that we are giving to the women for rescue and first aid, because these will be things that they will need to use. We have a lot of laws again for the protection of women at workplace, and this is very important because we have the Right to Information Act, but if people don't even know what their rights are, how can they go and demand justice or demand recompense for them? So I think, we have all these laws for protecting women at the workplace. We have laws for domestic violence. We have, laws for harassment. But I don't think our women, majority, if you go and ask anyone, do you know about these laws? Do you know how can you get redressal, or what is the grievance addressing mechanism for it? They will have no idea. So what we need is, I think, very, very strong advocacy and raising awareness to inform people about the existing laws that have been made for women. What are the tools and mechanisms that they can use to access? And I think that in when we look at it through the lens of climate change, three broad categories come to my mind where we need to invest. One is women in action, in climate action. The second one is women in enterprise. And the third one is women in journalism. I think all these three coming together can create that critical mass, or that change, or that
perception in society, supported by political will and a shift in narrative as well, to prepare our country and half its population to cope with the emerging crises that will inevitably hit us in one way or the other. And how can we deal with it without letting one half of our population carry that burden and suffer the hardships disproportionately? Thank you so much, Aisha Saiba, for your insights. Kashif Saab, can you hear me? Yes, Faria, I can hear you. ठीक है, मेरा अगला सवाल आपसे है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान मुल्क में क्लाइमेट गवर्नेंस में जो भी गैप एरियाज़ हैं उन पर काम कर रही है, तो आप क्लाइमेट एक्शन में जेंडर और कम्युनिटीज़ की कितनी पार्टिसिपेशन देखते हैं? Thank you, Faria, for this question and also for the session. First of all, let me pay my thanks to all the speakers. I know all three of them were extremely busy, but thank you for taking out time for this extremely useful discussion. Ma'am Aisha, I know you have to go for another meeting at 3:30, but thank you for still managing to be with us. मेरा ख्याल है, इसमें तो शायद कोई दो राय नहीं है। मिस आयशा ने भी इस पे काफ़ी बात की है कि जो क्लाइमेट का जो मसला है पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा मसला बन चुका है। स्पेशली अगर आप 2022 के फ्लड्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें या इफ़ यू लुक एट इट इन टर्म्स ऑफ द एसोसिएटेड डैमेजेस दैट वी एज अ कंट्री incurred in the 2022 floods, I think it's pretty clear that the climate change comes to us with a huge cost, both in terms of the social cost and the economic cost. मगर आई थिंक ये भी हमें एम्फसाइज करने की और समझने की ज़रूरत है कि जब हम डिज़ास्टर्स की बात करते हैं, किसी भी डिज़ास्टर में सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबिलिटी होती है वो मुआशरे के उस तबके की होती है जो ऑलरेडी पसमानदा होते हैं, जो ऑलरेडी वल्नरेबल होते हैं। इसीलिए ये समझा जाता है कि जब क्लाइमेट चेंज से मुंसलिक जितने भी डिज़ास्टर्स हैं, women are often at the receiving end of the climate effects. And why they are at the receiving end? Because they experience the effect of climate change more acutely and more disproportionately. इसीलिए मेरा ख्याल है हमें ये डिस्कस करना और इस चीज़ के ऊपर बात करना, जो अब पाकिस्तान में पिछले कुछ 1-2 साल से काफ़ी इसके ऊपर at the global level and also in our national conversation, this is being emphasized a lot. But I want to talk about it. I want to emphasize on this in relation to the climate governance frameworks. Again, I think if you look at it in perspective of the overall climate governance system in Pakistan, तो हमारे पास क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए फेडरल लेवल पे भी, प्रोविंशियल लेवल पे भी एक रोबस्ट क्लाइमेट फ्रेमवर्क मौजूद है, और इन पॉलिसीज़ के इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क्स भी मौजूद हैं। और मगर इस पॉलिसी साजी को अगर हम जेंडर लेंस से देखें या जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं स्पेशली एट द रूरल लेवल, उनकी नीड्स के तहत देखें, तो ये मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जिसपे मिस आयशा ने भी इसको रेफ़र किया कि पॉलिसीज़ शायद उस पर्सपेक्टिव से, जेंडर पर्सपेक्टिव से उस तरह उसमें अभी एम्बेडेड नीड्स को नहीं किया गया। तो ये हमें देखना, मेरा ख्याल है ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जेंडर की जो पार्टिसिपेशन है इनटू क्लाइमेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स एट द प्रोविंशियल लेवल एंड द नेशनल लेवल, वो किस सतह पे है और उसको मज़ीद किस तरह इन्हेंस किया जा सकता है। And I think if you look at the national climate change policy, it sets a very clear goal. It speaks about how to ensure that climate change is mainstreamed in the economically and the socially vulnerable sectors of the economy. और उसको अचीव करने के लिए हमारी जो नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है उसमें 14 नुकात फोकस किए गए हैं, और वो नुकात जो हैं they are focused on building the adaptive capacity of the vulnerable communities, especially the women. And I think why this is important, because again, if you think about the climate change and if you think about these sectors which are most affected by climate change, you will find women at the forefront of each of these sectors. For example, let's take the example of the disaster risk reduction.
हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की क्लैमिटीज, चाहे वो फ्लड्स हों, चाहे वो ड्राउट्स हों, अर्थक्वेक्स हों, इस तरह की जब भी डिजास्टर्स आते हैं, वुमेन आर मोर अफेक्टेड देन मेन. And why women are more affected than men? Because they are at the center of the household, especially in the rural settings. This also means that when women are affected, the entire burden of the household is also increased. Therefore, I think it's very important कि हमारी जो disaster response policies हैं, चाहे वो mitigation policies and adaptation policies हैं, they have to be and they must be gender neutral. They must be gender inclusive. And I think one way of making policies gender inclusive is to ensure that the citizens and the communities, particularly vulnerable communities, they have participation in the climate decision making. At Transparency International Pakistan, under the climate governance work, we are focusing and advocating a lot at the provincial and the local level, along with the disaster management bodies, on the inclusion of women. And some of the tools that we have are the public consultations, the involvement of communities and women in the selection of the projects, in the implementation of the projects. And this means that what we are trying to do is to empower women at the local levels. Because मेरा ख्याल है ये भी हमें emphasize करने की ज़रूरत है, essentially जो climate का मसला है उसकी जो solution है, that lies at the local level. This means कि जब disasters आते हैं उनकी preparedness में हमें ख़वातीन को needs को आगे रखना बड़ा ज़रूरी है. And if you look at it again in context of the climate governance structure, I think our existing structures provide excellent opportunities to strengthen the role of the women in the disaster response. Similarly, if we talk about other more pertinent sectors such as the food security, wash sector, coastal देखें, आप fisheries देखें, whether it is the livestock, whether it's the cropping, whether it's fetching the water for the households, we find women in our rural settings are often at the forefront for fulfilling these responsibilities. Therefore, I think it is essential कि जो हमारी gender policies हैं और sectoral policies हैं climate के ऊपर, they must prioritize the needs of the women in every sector. And thirdly, I think what I was emphasizing about the participation in climate policies, the participation also reflects itself in the management and the authority level. Now, and I think there it is important to look at what sort of energy, sort of agency do the women in Pakistan have to influence the climate policy making. Again, if you look at the National Climate Change Act, अब जो हमारा फेडरल क्लाइमेट चेंज एक्ट है उसमें ये कंसीव किया गया है कि क्लाइमेट चेंज काउंसिल एस्टेब्लिश होगा, एंड द क्लाइमेट चेंज काउंसिल इज एन एपिक्स policy making body under it falls under the office of the Prime Minister, having the representation of the various divisions of the federal government and the provincial governments, including the NDMA and the Climate Change Authority. And these sort of tools and the policy making arms that we have are very important in terms of integrating women voices into the decision making. But unfortunately, if you look at this council, the council has only been constituted twice or thrice in the last few years, and only rarely called by the Prime Minister over various governments. Same goes for the Climate Change Authority. So we need to, I think, जो हमारे पास existing platforms मौजूद हैं within the policy arm, we need to strengthen them. We need to bring gender inclusivity using these tools. And I think it's also important to emphasize here कि जो gender action plan है, in terms of that, again, another important milestone was reached last year when the IUCN, the International Union for Conservation of Nature, have formed a comprehensive gender action plan. And then if you look at that action plan, it takes into account the gaps and also sort of provides the way forward into how we can integrate gender inclusion into our various policy frameworks. But what I want to emphasize is कि हमारे पास शायद policies तो बन जाती हैं, action plans तो बन जाते हैं. How do we make sure that these action plans, right from the national, go to the provincial and the local level, so the trickle down effect has to be there.
And in that trickle down effect, I think we cannot exclude the role of local government. The local government is a very important part of this conversation, and there I think we have enormous opportunities to get the women voices across, whether it comes from the union level, local government numainde jo hain us level pe hamari consultations ho sakti hain, and then I think at the provincial and federal level ensuring that we do periodic reporting, क्योंकि रिपोर्टिंग होना बहुत ज़रूरी है कि प्रोविंशियल लेवल पे जो हम जेंडर एक्शन प्लान्स की बात कर रहे हैं वो किस तरह हमारी जो ओवरऑल पॉलिसी साजी है उसमें मेन स्ट्रीम होती है ये चीज़ें. So I think I will end here, and we'll keep on this discussion after the next speakers also speak. Thank you. थैंक यू सो मच काशिफ, आपने बहुत अहम पॉइंट्स की तरफ इशारा किया. मैं अब डॉक्टर नौशीन वसी साहिबा की तरफ जाना चाहूँगी. डॉक्टर साहिबा, कैन यू हेयर मी? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी फरीहा, थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान में क्लाइमेट मिटिगेशन और एडॉप्टेशन के लिए जो भी स्ट्रेटजीज़ बनाई जा चुकी हैं या मुस्तकबिल में बनाई जाएंगी, तो आप क्या समझती हैं कि इसमें जो मार्जिनलाइज्ड जेंडर्स हैं उनकी ज़रूरियात और उनके मसाइल को कैसे शामिल किया जा सकता है? अच्छा, देखिए, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया बात करने का. आयशा ने और काशिफ ने बहुत ही अच्छी और जामी गुफ्तगू की है प्रॉब्लम्स के हवाले से, और क्लाइमेट चेंज गवर्नेंस फ्रेमवर्क के हवाले से काशिफ ने बात की है. मैं ये बात करना चाहती हूँ, जो आप मिटिगेशन और एडेप्टेशन के हवाले से बात करना चाह रही हैं, इसमें बहुत बड़ा मसला जो हमें नज़र आ रहा है जब हम फील्ड में जाके काम करते हैं, वो अवेयरनेस के हवाले से भी है. तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बने और वो इम्प्लीमेंट हों, लेकिन उससे पहले हमें प्रॉब्लम को समझना भी बहुत ज़रूरी है. हमने ये देखा है कि क्लाइमेट चेंज किस तरह लाइवलीहुड को मुतासर कर रहा है, और फिर वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी पे इफ़ेक्ट करता है, जिसमें ख़वातीन बहुत वल्नरेबल हैं, और वो फिर बहुत से इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स को जनरेट कर रहा है. लेकिन इस बारे में ठीक तरीके से अवेयरनेस लोगों में मौजूद नहीं है. इवन वो लोग जो इफ़ेक्टिव भी हैं, वो भी ये नहीं समझते कि ये किस तरीके से उनकी लाइफ को मुतासर कर रहा है. मेरे पास जैसे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं. अगर आप ग्लोबल एशिया के लेवल पर बात करें तो आप देखिए, या हम साउथ एशिया को पहले ले लेते हैं, कि हमारी ज़्यादातर जो इन्हिसार है लोगों का, वो ज़रूरी पैदावार पे है. क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी पैदावार बहुत मुतासर हो रही है. ओवरऑल हमारी 30% पैदावार मुतासर हुई है. फिर अगर आप ये देखिए कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी में जब हम आते हैं, औरतों की डिपेंडेंस ज़्यादातर घरेलू इंडस्ट्री पे है, या वो इनडोर काम करती हैं. हीट वेव की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है. और फिर वो मुख्तलिफ सेक्टर्स में अगर आप जाके देखते हैं तो एक बहुत लार्ज परसेंटेज में उनकी लाइवलीहुड को मुतासर कर रही है, जो उनकी डिपेंडेंस बहुत बढ़ा देती है मर्दों पर. फिर जो सोशल प्रॉब्लम्स, यानी जो हमारे कल्चरल रोल्स हैं जेंडर के, उसमें अगर आप ये देखें, जैसे अभी बात हुई फायरवुड के लाने के हवाले से या वाटर को लाने के हवाले से, तो ख़वातीन को बहुत जगह हमने ये देखा है कि जो बच्चियां स्कूल जा रही थी, चूँकि अब वो घर में ज़रूरत थी कि वो वाटर अब लाने के लिए उन्हें ज़्यादा दूर जाना पड़ रहा है, या फिर वो जो चोर्स हैं घर के वो करना मुश्किल हो गया है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो वो वालिदैन ने बच्चियों को स्कूलों से उठा लिया. वो एक लॉन्गर रन में प्रॉब्लम जनरेट कर रहा है. फिर सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो रहे हैं. व्हेन दे ट्रेवल टू फार फ्रॉम देयर प्लेसेस, दे आर वल्नरेबल टू फिजिकल वायलेंस एंड द सेक्सुअल वायलेंस. तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है. मैं थोड़ा सोशल इम्पैक्ट पे काम कर रही हूँ प्रॉब्लम्स पे क्लाइमेट के हवाले से. इवन आप ये देखिए कि अर्ली चाइल्ड मैरिजेस बढ़ रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, और वो लिंक भी जनरेट हो रहा है, लेकिन ये अवेयरनेस मौजूद नहीं है. अब हमें क्या करने की ज़रूरत है कि हम ये अवेयरनेस जनरेट करें. अब आप ये देखिए कि जैसे गवर्नमेंट फ्रेमवर्क की मैं बात करूं या पॉलिसीज़ की बात करूं, इन जनरल हमारे मुल्कों में गवर्नमेंट तो इतना रिस्पॉन्सिव नहीं है.
اور یہ پارٹیسپیٹری فارم آف دی گورنمنٹ بھی نہیں ہے ہمارے ہاں، گورنمنٹ رسپانسو بھی نہیں ہے، گورنمنٹ فریم ورک لوگوں کی نیڈ کے لیے رسپانسو نہیں ہے. لیکن جو پرابلمس ایمرج ہو رہی ہیں اور خصوصاً کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، وہ تو امیجیٹ رسپانس مانگتی ہیں. تو اس میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جتنا این جی او سیکٹر میں کام ہو رہا ہے یا ٹی آئی ایڈوکیسی جو کر رہی ہے، جس طرح کر رہی ہے، وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ ہم پہلے تو یہ اویئرنیس جنریٹ کریں کہ ہاؤ کلائمیٹ چینج از افیکٹنگ دی لائف آف پیپل اینڈ از مور افیکٹنگ دا مارجنلائز کمیونٹی اسپیشلی دا ویمن. اور یہ اس میں ہمیں وہی میڈیم اختیار کرنا ہوگا جو لوگ سمجھتے ہیں ایک مخصوص کلچرل سیٹنگ کے ساتھ. اب ہماری جو سوشو اکنامک کنڈیشنز ہیں ہمارے مختلف علاقوں کی، اوور آل ہماری کنٹری کی، اس کو ذہن میں رکھ کے اور پھر ہمیں پلانس بنانے ہوں گے. اور اسی طرح پھر ہم جو گورنمنٹ کی پالیسی فریم ورکس ہیں، جیسے بات ہوئی کلائمیٹ ایکشن پلان کی یا کلائمیٹ چینج اینڈ جینڈر ایکشن پلان بھی تھا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اور بھی، جیسے کلائمیٹ چینج ایکٹ ہے، امپلیمنٹیشن ہر چیز پر زیرو ہے. تو یہاں تو یہ ہمیں نظر آ رہی ہے. تو ہمیں زیادہ ایڈوکیسی کرنی ہے، ہمیں کمیونٹی لیول پر، ہمیں لوکل سطح پہ لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے کہ یہ کس طرح پرابلمس کا شکار سوسائٹی ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، اور پھر ہمیں کیا پالیسیز اپنانی چاہیے. تو کمیونٹی لیول پہ پالیسیز بنا کے اس کو اپنانا آسان ہے. پھر گورنمنٹ کے ساتھ مل کر نیگوشیٹ کر کے ہم گورننس میکینزمس کو بہتر بنائیں، ڈیسیجن میکنگ میں خواتین کی پارٹیسپیشن ہو، اور پھر وہ امپلیمنٹ بھی ہوں. تو پھر ہم بہتر طور پہ اس پرابلم کو ایڈریس کر سکتے ہیں. اب دیکھیں میٹیگیشن اور ایڈیپٹیشن، تو میٹیگیشن بھی بات کی بات ہے، پہلے تو ایڈیپٹیشن ہے. ہمیں اڈیپٹ کرنا ہے ان چینجز کو اور اس کے مطابق اپنے رسپانسز جنریٹ کرنے ہیں. تو یہ ایڈیپٹیشن بہت ہی لوکل لیول سے شروع ہوگی، اور اس کے لیے پھر ہمیں کمیونٹی آؤٹ ریچ کی ضرورت ہے. اب وہ جب ہم بہتر طور پہ کریں گے تو بہتر پالیسیز بنا سکتے ہیں. اچھا، فوری طور پہ جو مجھے نظر آ رہا ہے، گیون دی اسٹرکچر آف آر کنٹری، دی گورنمنٹ افیئر اینڈ اٹس امپلیمنٹیشن میکینزم، ہمیں بہت ہی انفارملی اس کے لیے کام شروع کرنا ہوگا. اور وہ انفارمل مینز یہ ہوتے ہیں کہ آپ کس طرح کمیونٹی ورک کر کے لوکل انسٹیٹیوشنس کے ساتھ کنیکٹ بنا کر اور پھر آپ کام کرتے ہیں، تو اس چیز کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ فوری طور پہ ہمیں بہت بڑے پیمانے پر اویئرنیس کمپین کی ضرورت ہے. جو موڈ آف کمیونیکیشن استعمال کیا جا سکتا ہے وہ استعمال کیا جائے اور لوگوں کو یہ شعور دیا جائے اور اس میں کام کرنے کی کوشش کی جائے. اور سائڈ بائی سائڈ یہ بہت اہم کام ہوگا کہ گورنمنٹ ایکٹیو رسپانسو میکینزمس کو اختیار کرے، اور پھر ہم اس مسئلے کو بہتر طور پہ ڈیل کر سکتے ہیں. تو میں یہ اس ایسپیکٹ پہ بات کرنا چاہوں گی، اور اسی پر پھر ہم فردر اپنی گفتگو کنٹینیو کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ڈاکٹر نوشین صاحبہ، آپ نے کافی اہم اور تھاٹ فل اپنا اوپینین دیا. شبینہ صاحبہ، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. شبینہ، آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ شاید شبینہ جو ہیں وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں. کاشف صاحب، میں آپ سے آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی اور آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے پسماندہ طبقوں کی بات کی جو بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں کلائمیٹ چینج سے، تو ان طبقوں کے ساتھ یا جو بالکل فور فرنٹ پر ہیں کلائمیٹ چینج کے، وہ کمیونٹیز جو ڈائریکٹ اس کے اثرات سہ رہی ہیں، تو ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے آپ نے کتنی ان میں اویئرنیس دیکھی ہیں کہ کیا وہ کلائمیٹ چینج اور اس کے خطرات سے واقف ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس اسکیل پر انہیں ان کی اویئرنیس کے لیے کام کیا جا سکے تاکہ وہ ان خطرات سے نمٹ سکیں؟ Thank you, Faria. I think we are experiencing some internet problem کیونکہ جو نیکسٹ اسپیکر ہیں وہ بھی I think she has some connectivity issue, but I'm still happy that we were able to pull this off despite the Twitter not working. But what you said about awareness, دیکھیں جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو کام ہے وہ ہمارا کلائمیٹ سے ہٹ کے ایک broadly speaking about the awareness regarding the governance frameworks, and broadly speaking about the participatory tools.
So we have a lot of work in that area. And obviously, the TI is the Transparency International. Pakistan is not an expert on climate change. So that's why what we are doing on the climate change, we are looking at it particularly from the governance perspective. कि जो लोगों की अगर आपने शमूलियत को यकीनी बनाना है तो गवर्नेंस एक तरीका है उसके लिए, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम हो, चाहे वो हमारे पास राइट्स की शक्ल में हो कि लोगों में उनके राइट्स की अवेयरनेस को रेज़ करना। एंड देयर आई थिंक जो पहले भी बात हुई थी कि जो पार्टिसिपेशन के जो टूल्स होते हैं सच एज़ राइट टू इंफॉर्मेशन, सोशल अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक कंसल्टेशंस, ओपन बजटिंग, अब ये वो टूल्स हैं चुनाचे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा है उसमें लोगों के ये राइट्स तो अब ऑब्लिगेट और मैंडेटरी राइट्स हैं, मगर हमें देखने में ये आता है कि लोग शायद उस तरह से इन राइट्स को इस्तेमाल नहीं करते। So, for example, if you look at it from the climate change perspective, the climate finance is now a very important subject. And for a country like Pakistan, being the fifth most vulnerable country, we are at the forefront of accessing climate finance, both in the context of mitigation and adaptation. And to ensure that the climate finance is utilized in a transparent way, what we have been emphasizing on is the right to information as a tool for people to participate in climate decision making, चाहे वो projects का लगना हो, चाहे वो project की जो है projects का जो है initial शक्ल अख्तियार करना हो, जिसको हम PC1 document कहते हैं, तो उसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा जो डॉक्टर नौशीन ने भी कहा, and before that Aisha also said it, I think we the civil society need to play a lot of role in this to sort of increase this awareness, and यही हमारे मेरा ख्याल है कि यही हमारे पास टूल्स हैं लोगों में एक अवेयरनेस आगाही रेस करना। जहाँ तक क्लाइमेट चेंज का ताल्लुक है तो उसमें हमारे मुल्क में अगर आप नेशनल लेवल पे कॉन्वर्सेशन देखें या प्रोविंशियल लेवल पे, तो एक क्लाइमेट अब एक उभर के सब्जेक्ट तो आया है सामने। आज से 3-4 साल पहले हम इस तरह नहीं देखते थे कि क्लाइमेट के ऊपर कॉन्वर्सेशन हो, मगर अब इसके ऊपर क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है। मगर बात ये है कि क्या वो तबका जो क्लाइमेट से बहुत ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनली इफ़ेक्टेड है, क्या उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो क्लाइमेट डिसीजन में अपनी राय को यकीनी बना सकें? क्या उनके पास वो एवेन्यूज़ मौजूद हैं कि वो ये डिसाइड कर सकें कि लोकल सतह पे कौन सा प्रोजेक्ट वो समझते हैं उनके लिए यूज़फुल है? क्या उनके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं कि वो लॉस की जो है उसमें अपना इनपुट दे सकें? अब आप प्रोविंशियल और फेडरल क्लाइमेट चेंज की पॉलिसीज़ देखें तो इन सारी पॉलिसीज़ में ये यकीनी बनाया गया है कि पब्लिक कंसल्टेशंस करना लाजिम है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो पब्लिक कंसल्टेशंस के लिए जो टेंडर्स इश्तिहार आते हैं वो शायद एक ऐसी अखबार में आते हैं जो लोग उस तरह इन्वॉल्व नहीं होते हैं इन पब्लिक कंसल्टेशंस में। सो व्हाट वी आर डूइंग एट TI पाकिस्तान इज़ टू सॉर्ट ऑफ bring this message and take this message to the grassroots level. We have this tool called climate dialogues. We are going to the vulnerable areas, लोगों को वहाँ पे आगाही देना कि जी क्लाइमेट पॉलिसीज़ हैं क्या, इन पॉलिसीज़ में आप अपनी राय को किस तरह इंक्लूड कर सकते हैं, सेक्टोरल प्लान्स हमारे बनने हैं पॉलिसीज़ के बेसिस में, उसमें आप अपनी नीड्स को किस तरह रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस के प्लान्स बनने हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो फंक्शनल बॉडीज़ हैं उसमें आप किस तरह सिविल सोसाइटी और कम्युनिटी अपनी पार्टिसिपेशन को यकीनी बना सकते हैं। So there is a lot, I agree with what Dr. Noshin said and Aisha said earlier, that we need to, I think, play more role in terms of increasing this awareness. So I think Ms. Shabina is back, so maybe you can take her input now. शबीना साहिबा, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? उनका बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। शबीना, आप सुन सकती हैं मुझे? She's again disconnected. जी, उनका डिस्कनेक्ट हो गया है। डॉक्टर नौशीन, मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूँगी जी कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के दौरान जो ख़वातीन मुख्तलिफ़ मसाइल से गुज़रती हैं और हम देखते हैं कि बहुत कम उनके मसाइल और ज़रूरियात का ख़याल रखा जाता है, तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के हवाले से अगर आप कुछ बता सकें कि इस दौरान
کیا ایسی پروویژنس کی جائیں کہ خواتین کے مسائل کو بھی جو ہے وہ مد نظر رکھا جا سکے؟ یہ بھی فریحہ بہت اچھا سوال ہے، اور میں تھوڑا سا کاشف کی بات سے ایک ہنٹ لے کے آگے بڑھانا چاہوں گی اسے۔ یہ بات ہوئی ہے کہ پچھلے 4-5 سال سے بہت ایکٹیویزم ہمیں نظر آ رہا ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے، جو پرابلمز ہو رہی ہیں بالخصوص کلائمیٹ چینج، اس کا ایک اسپیکٹ ہے۔ دیکھیں، اس کی بڑی وجہ ہمارے ملک میں ریپیٹڈ کرائسس ہے۔ جو ہمارے ہاں فلڈنگ بہت زیادہ ہوئی ہے، اور اس نے بہت زیادہ مسئلے پیدا کیے ہیں، اور یہیں سے ہیومینیٹیرین کرائسس ایسوسیٹڈ ہے۔ اب یہ بات تو بہت ہو رہی ہے، لیکن بات پرابلم کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ ایک پرابلم ہے جو اب محسوس کی جا رہی ہے، یہ بھی اچھا قدم ہے، پہلی سٹیج ہے۔ جو ہیومینیٹیرین کرائسس جنریٹ ہوتا ہے نا، اس کے لیے ہمیں ریزیلینٹ انفراسٹرکچر چاہیے۔ جیسے ہمیں فلڈ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر چاہیے، ہمیں آلٹرنیٹ ریسورسز چاہیے، ہمیں آلٹرنیٹ جو کمائی کے ذریعے ہیں وہ چاہیے، جس سے اگر جو افیکٹڈ کمیونٹی ہے وہ فوری طور پہ اس کو ایک سبسٹیٹیوٹ اس کے پاس اویلیبل ہو، اور جس طرح کے کرائسس ہم دیکھ رہے ہیں وہ ری ایمرج نہ ہو۔ لیکن ہمیں اس حوالے سے کوئی بہت پرو ایکٹیو کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ جیسے آپ سندھ میں آپ یہ دیکھیے کہ ابھی مکان بنانے کی اسکیم ہے جو ورلڈ بینک کے ساتھ سندھ گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی ریسرچ کرنے کی کوشش کی، لیکن لوگ بہت زیادہ ہوپ فل نہیں ہیں، کیونکہ اس میں ورلڈ بینک کی اور بہت ساری کنڈیشنالٹیز انوالوڈ ہیں۔ ہمیں تو ریاستی سطح پر ہی یہ کام کرنا ہوگا اگر ہم اپنے ملک کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ ایک کرائسس، اس میں بہت سارے نا کراس کٹنگ ایشوز ہیں، اور ایک کرائسس سے دوسرا کرائسس ایسوسیٹڈ ہے، اور بہت بڑی ہیومن ڈیزاسٹر بننے جا رہی ہے۔ انفارچونیٹلی اگر یہی سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے اور آئندہ 1.5 سے 2 سال میں ہم ایک نیا فلڈ سائیکل دیکھتے ہیں، تو ایک بہت بڑا ہیومن ڈیزاسٹر یہاں پہ جنریٹ ہوگا، اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے میں آپ کو بہت افسوس کے ساتھ یہ کہوں کہ ہمارے پاس کوئی کنٹینجنسی پلان موجود نہیں ہے۔ ابھی تو پرانی ریہیبلیٹیشن نہیں ہوئی ہے، نئے ریہیبلیٹیشن کی طرف کس طرح سے جائیں گے، اور وہ جو کرائسس سائیکل جنریٹ ہو رہا ہے جس سے بہت سارے ایشوز ایسوسیٹڈ ہیں۔ بہت امپورٹنٹ ہے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر۔ جیسے ایک اور رپورٹ میں دیکھ رہی تھی کہ وائلنس ہماری سوسائٹی میں بہت بڑھ رہا ہے، اور اس وائلنس، یہ مارجنلائز کمیونٹی میں جو افیکٹڈ ہیں انوائرمنٹ سے، ان میں بہت زیادہ اس کی شرح ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جو فرسٹریشن ہے لوگوں کی، وہ اینگر میں تبدیل ہوتی ہے، اور پھر جو ویک ہوتا ہے وہ اینگر اس میں نکالا جاتا ہے۔ سو دیز کائنڈ آف ایشوز وی ہیو بین آبزرونگ اوور دا پیریڈ آف ٹائم، اور چونکہ ہمارے گورنمنٹ کا رسپانس بہت سلو ہے اور صرف پالیسی میکنگ کی حد تک ہے، اس لیے میرا تو یہ خیال ہے، میں تو جب ان کمیونٹیز میں جا کے کام کر رہی ہوں اور دیکھتی ہوں تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہم تو اس کو اب بہت اچھی طریقے سے ویژولائز اور کانٹیکسچولائز ہی نہیں کر سکتے یہاں بیٹھ کر جو گراؤنڈ پہ صورتحال ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ابھی جو پرابلم ہم نے لاسٹ ایئر فیس کی تھی فلڈنگ کی، اس میں جو ہماری چیریٹی ورک بہت زیادہ ہوا ہے، جو ڈیولپمنٹ سیکٹر سے کام ہوا ہے وہ کام بہت زیادہ ہے، اور انہوں نے ہیومن نیڈس کو ایڈریس کرنے کی بالخصوص خواتین کے حوالے سے کوشش کی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، یہ فیصل عیدی صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی کہ ہم بہت کچھ چاہ کر بھی 10% سے زیادہ آگے کام نہیں کر سکیں۔ تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہیومینیٹیرین کرائسس جو جنریٹ ہو رہا ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں، اور ہم کتنے زیادہ پرو ایکٹیو ہیں۔ تو یہ کلائمیٹ چینج بیسیکلی پرو ایکٹیو ایکشن ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور ہم ابھی ڈیفینسو موڈ پہ بھی بہت سلو ہیں۔ تو یہ ہمیں اب اس کو بہت اور زیادہ ہمیں پرو ایکٹیو طریقے سے فیلڈ میں کام کرنے کی ضرورت ہے، ہر سطح پر کوآرڈینیشن کے ساتھ۔ ٹی آئی تو نو ڈاؤٹ بہت اچھا اس سلسلے میں اپنا رول بیونڈ اٹس مینس کر رہا ہے، لیکن یہ کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بہت زیادہ پرو ایکٹیو اپروچ رکھیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نوشین صاحبہ، اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے تمام اسپیکرز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے اس کے لیے وقت نکالا اور اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس آن لائن سیشن کا اختتام کریں گے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ۔ تھینک یو ڈاکٹر مشین۔
Thank you, Kashif, for having me.